Number 14, and today we are going to start with the C programming on arrays. So let me start with sharing my screen. So yesterday we stopped till unions, and now it's kind of we are going back to arrays because that is a thing which is needed for your sixth experiment. So we'll finish off this and then we'll continue with the union. So what are arrays? We have already seen kind of arrays in earlier examples where we worked with the strings. Now array is a variable data that can store multiple values. For example, we want to store hundreds of integers. Then you cannot keep on declaring hundreds variables. So you can just declare a array with a rectangular bracket around it and saying the number of data memory points you want to store inside it. So here 100, you can define an array like this. So array will always have an indices starting from 0 and it can end with n minus 1. So if your array size is equal to 5, then your n minus 1, that is 5 minus 1 becomes 4, and that will be your last array element that you can access. Now, how to declare an array? So data type, firstly, whatever int, float, char, whatever we have learned will be your data type. Then some array name, which will be a variable name. And then in bracket, you can declare the data size. For example, float mark 15, 5. So this array will be mark, named mark with the size of 5 inside it. So you can imagine array as a column or a row matrix which can hold multiple values. Typically, we assume it to be a row matrix, but basically, remember it's like declaring multiple variables in a single line. Here we declare an array mark with floating point type and its size is 5, meaning it can hold up to 5 floating point values inside it. So it is important to know that the array cannot be changed once it is declared. So we cannot change the size and type of the array if we declare it, not like other programming language where we can change the size of the array and type data type on the go. But C is kind of a traditional language where we define an array. Then if I try to assign a character to this float, it will throw an error to me. Now access the array elements. Basically, array elements can be accessed by its indices. For example, the first element of the mark array is always mark into a rectangular bracket 0, and the second element will be mark into a rectangular bracket 1, and so on. So in this particular declaration, you can store some 31 or 2 or 1.5 or something like 3 or maybe 4.5. So you want to read 4.5, you have to write mark into a rectangular bracket 4. So this is how you can access the elements of an array. Now we have 0 as the first index and not 1. This is kind of confusing, and that's why in higher level programming languages like MATLAB, they started all the indices from 1 so that your array size and the indices number always match. Whereas in C programming, the size of the array is n and its indices are always 1 minus than n. And for example, here for mark, the maximum array which we can access will be mark 4. Now, suppose the address starts with mark 0, saying its address is 2120D. This is the inside actual physical address onto your RAM. And then address with mark 1 will be 2024D because there are the type uses 4 bytes inside. So basically, your internal addressing also considered as per the data type. Since it was a 4 byte data type, it was a float. That's why the next address will be internal memory में 4 बाइट बढ़ के सीधा 5th बाइट पे आता है. 0 1 2 3 बुक हो गए तो सीधा 4th एड्रेस नेक्स्ट होगा. And similarly, the further address mark 2 will be stored at 12128D. ये आगे जो D लिखा है that indicates decimal. We have already seen now in our class what is basically a hexadecimal, a decimal, and binary, and so on. So this particular thing is in decimal. So हम सीधा addition कर पा रहे हैं 4 4 से because float is of 4 bytes.
Now, how to initialize an array? Is it possible to initialize the array during the declaration itself? So yes, you can declare array directly on the go. So this is where you declare int marks into bracket 5, and then you just mention 5 values in front of it, and it will get assigned to it. You can also try to declare a bigger array and assign a less value to it. What happens? Next is you can initialize the array with the corresponding values. So you haven't specified the size. However, compiler knows it is of size 5. So this 5 is not mandatory to mention, and that's why it is automatically counting the number of elements that you are giving and automatically initializing those 5 elements over here. And it will also arrange them serially. So typically, the curly bracket generally gives a serial arrangement. And if you want to do a non-serial arrangement, you can swap them later on. So this is how a particular value will be displayed onto a screen. Now, how you can change the value of an individual array element? You can do that by directly accessing that memory location. And let's say I want to change my mark 2 to -1. Remember, mark 2 is not 10. Uh, this is intuitive, but mark 2 is basically 8. So we are changing this 8 value to -1. Similarly, mark 4, which is the last element, will get changed to 0. So remember this, when we are doing a particular change of value of array, you can see this becomes your variable name directly. Now, first is let's try and input and output an array element. So how you can store the data input into an array by using your standard scanf and then writing %d. Now %d, that means it will be an integer, and then ampersand mark bracket 2. So this is you can directly access the element. Similarly, you can use a for loop and then directly write I-1 if you want to scan multiple elements together, and where your I is always changing. The -1 we are writing because all the elements will start at 0, and generally you initialize your I equal to 1. So that's why I-1 is what we return here. Now here you can printing the array. It is again very similar to your input matrix like scanf and printf. यहाँ पे printf में सिर्फ instead of writing variable name, जैसे हम हमेशा करते हैं कॉमा देने के बाद variable name डालते हैं, we will directly write an array with the rectangular matrix in front of it. तो समझ रहे हो आप कि आपने लेट्स से फर्स्ट मार्क डिफाइन किया और मार्क ऑफ 0 पे मैंने स्टोर किया पहले सब्जेक्ट के मार्क्स विच वाज लाइक 55. चलो एग्जाम 60 में से ही पकड़ के चलो. नेक्स्ट इज मार्क 1. यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे 60 मार्क आ गए whatever. So now if I want to print the first subject's marks, I have to write printf mark 0 this command. इसमें %d इसलिए लिखा क्योंकि ये इंटीजर में था. So that's why it is indicating with %d. अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट में होता तो ये %d चेंज होके %f हो जाता. एंड सिमिलरली आपको अगर सारे एलिमेंट्स इन अरे पास कराने हैं, so you can use this indexing function or indices function with I changing its values every time. तो एक for loop लिख के चलो, for I going from 0 to whatever is the length of this particular mark array, and then you can decrement that I or increment that I depending upon your input and output. So here is the first program, a program to take 5 values from the user and store them in an array and print the stored array. So this is what we are going to write, the first program with the arrays. Now for that we start with include stdio.h, then your main function starts. हम यहाँ पे 5 डिक्लेरेशन करते हैं हमेशा. मेन फंक्शन में वी विल गो फॉर int values. 5 वैल्यू लेने हैं तो सीधा 5 लिख दिया ब्रैकेट में, एंड देन printf enter the 5 integers. नाउ रिमेम्बर जो बहुत हार्ड कोड सी प्रोग्रामर्स होते हैं उनको आगे चल के माइथन और मैटलैब में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा 0th एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी हैबिट बन चुकी है. पर वहां पे सारे ही इंडेक्सिंग शुरू होती है 1 से. So we have to be careful in which programming language the indexing is 0 and which programming language the indexing start with 1. I am not sure, but I guess Python also starts with 0,
MATLAB starts with 1 and C program starts with 0. Next is for I going from 0 till I less than 5, I plus plus. So this is how you initiate a for loop for multiple scannings. You don't have to write 5 different statements of scanf, and inside this for loop you can just say scanf %d ampersand values of I. So this is the easiest way, because लेस देन 5 लिखा है तो ये I will start from 0 1 2 3 और 4 तक ही जाएगा and it will automatically stop. Then for displaying the integers you can again write another for loop. अब आप पूछोगे कि वो ऊपर वाले for loop को यूज क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते थे यूज, just because of first storing and then printing, इसलिए अलग से लिखा है. You can see the line by line for loop is the same, that is for int I equal to 0, I less than 5, plus plus I. Then here you can say next thing is your %d slash n new value or नई line, and then values of I you go on printing and then return 0. So आप यहाँ पे यूजर से एकदम 5 इंटीजर लेते हो और 5 इंटीजर प्रिंट कर देते हो. So new students, you have to carry this particular experiment today, where you will ask user to enter 5 values and then you will do a summation of those 5 values using an array operation, and then you will display the result. Next is calculate an average. Okay, exactly the same what I have asked you before. So this is the program we have to write today. So you first include the library function, then a main declarations. Then this time basically there are multiple integers we are adding. So पहले तो 10 साइज का एक अरे लिया है मार्क्स का, फिर आई एन सम इक्वल टू 0 और एवरेज, इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं. Now let us understand how they are used inside the program. We will ask user to enter the number of elements and that will be stored as n. Now here n can be anything. So user will enter n. N should be less than 10. अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है आप मुझे बताओगे प्रोग्राम में, क्या एरर आता है या नहीं आता है एरर, वो अपने आप वो मार्क 10 का साइज बढ़ा लेता है क्या, जो भी होता है मुझे बताना. फिर आगे क्या होता है, फिर आई लेस देन 5, लेट्स से इस प्रोग्राम में 5 डाला है n इक्वल टू, so I going from 0 till it reaches that particular point plus plus I. Then you will printf enter a number, then %d, and you show I plus 1 because your I loop starts from 0. तो वो बताएगा enter first number, enter second number and so on, and then scanf %d. Okay, so यहाँ पे भी %d के साथ वो स्कैन करते जाएगा और मार्क्स ऑफ आई को स्टोर करते जाएगा. जैसे ही स्टोर करेगा और एक वेरिएबल सम करके डिक्लेयर किया है, तो वो उसकी एवरेज भी निकालते जाएगा. पहले तो एवरेज करने से पहले पूरा सम करते हैं. तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले आप a प्लस बी प्लस सी जैसे 3 वेरिएबल है उनको ऐड कर लेते हो और फिर डिवाइड बाय 3 कर देते हो. तो यहाँ पे हम पहले जो करते हैं इस ऑपरेशन को सम ऑपरेशन है, विच इज गिवन बाय दिस मेथड. अब ये बहुत अजीब तरीके से लिखा गया है, मुझे ये राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं हमेशा लिखता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई. So that makes it easier to understand for the readers also. Now I know some expert will say ये ऐसे क्यों अजीब तरह से लिख रहा है, but this is a straightforward way of writing. Even I always write I equal to I plus 1 into your for loops instead of plus plus I, because that is pretty straightforward instead of complicating the things. Then finally average is equal to sum by total number of elements, which is n, where the loop exited, and that will be your final average. अब याद रखो आपका 0 से चालू हुआ, तो ये लूप एग्जिट होते होते n की वैल्यू जो है वो 5 हो चुकी थी, तभी वो i इक्वल टू 5 से कम हुआ, एंड दैट्स व्हाई डायरेक्टली n से डिवाइड किया, n-1 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि आपने 0 पे स्टार्ट किया था. और फॉर लूप जब एग्जिट होता है तो वो उसकी लास्ट इटरेटिव कंडीशन से एक नंबर आगे होता है. And then you print the average using the particular program, and this is how a particular output will look like. It starts with enter n, user has entered 5, then it asks for number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. अब हम जब सी प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो हमारे टीचर ने हमको बताया था कि यू राइट अ प्रोग्राम दैट विल आस्क अ यूजर टू एंटर फर्स्ट, हाँ ऐसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर. तो ये 1 2 3 4 जनरेट करना बहुत आसान है, पर ये एस टी एन डी
RD करना बहुत मुश्किल रहता है, एंड यू कैन ऑल्सो थिंक ऑन दिट, इसको कैसे कर सकते हैं, एंड देन लेटर ऑन आई विल टेल यू द आंसर. तो फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, एंड सो ऑन. ओके, then finally you display the average, and then you have computed the average of same numbers using this program. So access the element when it's out of its bound. Let's say you declare an array of 10 elements. Okay, so now you have a access from 0 to 9 because you have already declared this element. Now somehow you try to access the 12th element which was not declared. Now this element is not available, and this may cause an unexpected output or undefined behavior. Sometimes you might get an error, or sometimes your program may run correctly, giving you a garbage value. अभी तक हमने garbage value के बारे में सुना नहीं है. तो garbage value ये जो concept है, इसमें क्या होता है कि आप memory जो है उसमें रैंडम नंबर अपने आप आ जाता है जो हम रीड कर लेते हैं, जो हमने नहीं डाला है ना ही प्रोग्राम ने डाला है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल अ गार्बेज वैल्यू और द इनिशियल गार्बेज वैल्यू, जो कि बाय डिफॉल्ट मेमोरी जब लास्ट टाइम कंप्यूटर बंद हुआ था उस वक्त तो उस मेमोरी लोकेशन पे जो लिखा था वही स्टोर्ड रहता है. आपको पता है कि रैम दो तरह के होते हैं, एक वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल. तो जो रैम मेमोरी पावर ऑफ होने के बाद भी रिटेन करती है, वहाँ कुछ गार्बेज वैल्यू हम बोलते हैं क्योंकि वो इस प्रोग्राम से बिल्कुल रिलेट नहीं करती. So basically you should never access the element which is outside its bound. Sometimes even if you write something on array 12 and then you try to read it, since it was not defined, it is not mandatory that particular 12th element that you have written will hold the value because it was not locked by the C program. So remember this कि ये जब हम अरे 10 लिखते हैं तो यू कैन एज्यूम कि आपके पास 10 लॉकर है जिसकी लॉकर की सिर्फ तुम्हारे प्रोग्राम के पास है और उसमें रखी हुई चीजें एज इट इज रहने वाली है. जबकि हम अरे 12 में कुछ अगर लिखते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर, सिंस यू हैव नॉट डिफाइंड अरे 12, इट्स लॉकर की इज नॉट विद अस, ये ओपन लॉकर है, तो उसमें आप जो भी रखोगे वो शायद वहां मिले या शायद ना मिले. तो इस तरह से ये होता है. सो नेवर try to access an element beyond its particular bound, and sometimes उसी मोमेंट पे अगर नेक्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो वहां वो वैल्यू होगी, पर रिमेंबर विंडोज पीछे आपकी रैम यूज कर रहा है, तो इफ यू डोंट बाउंड योर रैम then it might happen that some other program will override that particular location. Now let us understand. So this was everything about one dimensional array, and now we are going to learn about multi-dimensional arrays. तो व्हाट इज अ मल्टी डायमेंशनल अरे? अब तक हमने सिर्फ सिंगल डायमेंशन दिया है. मल्टी डायमेंशन इज एब्सोल्यूट मैट्रिक्स. सो फॉर एग्जांपल इफ यू डिक्लेयर फ्लोट into a rectangular bracket 3 and into another rectangular bracket 4 and then you put a semicolon. So here X is a two-dimensional array which can hold up to 12 elements. So you can think it's a table of 3 rows and 4 columns. So this is how you can access a two-dimensional array. And similarly you can declare a three-dimensional array also. So in C programming you are supported with multi-dimensional arrays, and this particular 2 4 3 can hold up to 24 elements. That is 2 into 4, and that is 8 into 3, that is 24 elements. So you can imagine अगर आपको 24 वेरिएबल डिक्लेयर करने होते तो कितना मुश्किल होता. यहाँ पे सीधा एक लाइन में सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए. Now, how you initialize the multi-dimensional array? So we will take an example of two-dimensional arrays first. So two-dimensional array, when you declare, so you have to write C of 2, 3. So something like C of 2 हम अब तक लिख रहे थे, तो अब C of 2, 3 लिखना है, and then you have to give the values that you want to store at that particular location. So here you will see that we have declared a 2 cross 3 matrix. So 2 cross 3 matrix मतलब उसमें आपको दो रोज देने होंगे. ये दो रो है और उसमें 3 कॉलम देने होंगे, तो ये 3 कॉलम है. So remember total 6 elements you have to declare here, and then 0,0 पे 1 होगा, correct, and then 1,0 पे -1 होगा, and so on. So similarly, if you don't declare the first element, like if you leave them blank, it will automatically find out कितने rows और कितने columns है.
ना आप ये रोज और कॉलम सेपरेट कैसे कर पाते हो? आप जब कर्ली ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट देते हो तो ये जो है ये पूरा फर्स्ट रो होता है, फिर कॉमा देके सेकंड कर्ली ब्रैकेट जब स्टार्ट करते हो उसके अंदर ये पूरा सेकंड रो होता है, एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर योर मल्टी डायमेंशनल अरेज. सिमिलरली इसमें हम 2x3 नहीं दे रहे हैं, इसमें वापस 2x3 दे रहे हैं. सो दीज आर द 3 वेज. अब इसमें आप एक देखोगे कि इसमें डबल कर्ली ब्रैकेट नहीं है, बट योर प्रोग्राम नोज दैट information is 2x3. So this is the best way to declare by putting the curly bracket, so that program also knows where are the ending points of each row. Now let's see how you will initialize the third three-dimensional array. So here you can see that curly brackets are just first curly bracket open, then second curly bracket for inner 2D matrix. Once we complete that 2D matrix, then again two curly bracket opens and then two curly brackets close, and then this finally main curly bracket close. So basically whenever you start with three-dimensional arrays, आप देखो ये जो लास्ट एलिमेंट है उतना सेट बनता है हमेशा. अरे डिक्लेरेशन में ये लास्ट एलिमेंट है उतने का सेट बनाओ, ठीक है. और फिर उसके पहले वाले जो है दैट इज 1 2 3, इन सबका कर्ली ब्रैकेट में और एक सेट बनाओ, एंड देन यू गो फॉर द फर्स्ट वन. सो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, बट जनरली रिमेंबर ये लास्ट में जितने भी नंबर है उतने नंबर्स का एक सेट बनाओ. Now here is a program to declare a two-dimensional array, store the value and print its values back. So here we are taking a city which is a constant with 2, and then week which is a constant with 7. Now we start with the main program. We are actually loading city 1, city 2, temperature per week. So here you declare an two-dimensional array with 2x7. Okay, then we write a nested loop to load the values. The first loop is for the city, that will go from 0 to 2. The second loop will go for day in the week, which will go from 0 to 6 because it's a total 7, and even city will go from 0 to 1. And then you actually printf city percent day, that is city 1 day 1, city 2 day 2, and then you go on incrementing your I plus 1 to display the correct value, because आपके I और J दोनों 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. यहाँ पे I इक्वल टू I प्लस 1 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ I का अपडेटेड वैल्यू प्रिंट कराना है ताकि यूजर को सही से दिखाई दे. एंड देन यू डू अ scanf, उसमें भी टेम्परेचर ऑफ I और J को आपको रीड करके स्टोर करना है. Then printf command आती है which will display the value, and once you do that then you write this complete second code for printing. Again you will ask me कि इसी में क्यों नहीं किया. I will give you the same answer कि कोई जरूरत नहीं थी, उसमें भी हो सकता है, पर हम अभी सेपरेटली प्रिंट करना सीख रहे हैं और सेपरेटली रीड करना सीख रहे हैं. तो राइट करते वक्त या फिर प्रिंट करते वक्त ऑन स्क्रीन you have to just write temperature I comma J in the same way like it's a nested loop, nested for loop. So remember अगर 3-dimensional array होगा तो आपका nested for loop मतलब for के अंदर for चलेगा. और ये भी याद रखना कि पहला वेरिएबल जो है वो सबसे बाहरी वाली लूप का रहता है और दूसरा वेरिएबल जो है वो अंदर वाली लूप का रहता है. तो अगर आपका मैट्रिक्स है 2/3 तो पहला फॉर लूप जो चलेगा वो 0 से लेके 1 तक चलेगा और दूसरा अंदर वाला फॉर लूप जो है वो चलेगा 0 से लेके 2 तक. सो रिमेंबर दिस. अगर दोनों 3-3 है तो आपको इतना समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर लूप कहाँ चल रहा है, पर जब दोनों सेम साइज के नहीं होते तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट द इनर फॉर लूप is always with the larger number or row wise elements. Now here is how the program will look like. City 1 day 1 temperature, city 2 day 2 temperature, up to 7 day city 1 temperature लिया, फिर city 2 का day 1 to 7 temperature लिया, and finally we are displaying the values. अब आपको जो प्रोग्राम लिखना है that will be very similar. आप मुंबई का लेट्स से टेम्परेचर लोगे और मे बी दिल्ली का टेम्परेचर लोगे फॉर 7 consecutive days, ठीक है.
and then you will give me the 8-day ka value by fitting a linear line through them. So that is the next task you have to do today. Ki how we can predict 1 day next value by fitting a straight line passing through all these points. Okay. So you know y equal to mx plus c. उससे आप ये आराम से कर सकते हो. Later on I will tell you how to do that. So let's go to the second problem statement where we want to do a sum of two matrices. Now, you know, whenever you want to add two matrices, they has to be of same size. So यहाँ पे हमने बहुत simplify कर लिया है, दोनों matrices 2 by 2 के है और उसका result भी finally 2 by 2 में ही आ रहा है. Now, in addition of the matrix, there is no rule of such as m cross n or next matrix जो है उसके लिए it should start with n and so on. So both matrix has to be of same size m cross n. Then only you can do a addition क्योंकि ये element to element addition होती है. तो दोनों का size हमेशा same रहता है. Unlike your multiplication where these two numbers should match, it should have a same dimension for both the matrices. So here we will ask user to enter the elements of the first matrix. Again, you use a for loop to read the elements from the user, that is 1 comma 1, 1 comma 2 and so on, and store the results at particular aij. Then you read the second matrix, then you store the element at bij, and finally you run another loop. Now in this loop, what we are doing is we are adding the aij's with bij, and then finally we are displaying out the matrix result. So you know, you will tell me sir बहुत सारे unnecessary same for loop आपने लिख दिए है, but remember हमने I और J हर बार override भी किया है. So we are not actually wasting the memory. हाँ, अपना effort ज्यादा जा रहा है क्योंकि ये चारों लूप साथ में ही लिख सकते थे एक ही शॉट में, पर आप जब तक मैट्रिक्स पूरा रीड नहीं कर लेते, it is not advisable to do a addition of those two matrices. कभी कभी एलिमेंट रीड आउट होने से पहले उसकी एडिशन का कॉल आ सकता है. So it is always better that when you are reading a input operation, don't try to further simplify it by doing a operation in real time with it. So let the input get stored properly and then you can do a addition. हाँ, addition और display करने का result आप साथ में कर सकते हो if there are no further processing. टिपिकली आप इस तरह से ऑपरेशन नहीं करते. वी जनरली कॉल देम अ डेडलॉक सिचुएशन. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं. आपने a प्लस बी इक्वल टू सी लिखा, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में आपने c प्लस ए इक्वल टू बी लिखा और उसके नेक्स्ट ऑपरेशन में आपने लिखा b प्लस लेट्स से c इज इक्वल टू a. अब इस तरह से कुछ ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको ये जानना होगा कि जब तक a प्लस बी ऑपरेशन नहीं होता ये c अपडेटेड नहीं होगा. तो अगर आप पहले वाला c लोगे तो वो अपडेटेड c नहीं होगा और उसकी वजह से आपका जो ये c प्लस ए आंसर जो b वाले आने वाला है इसको हम यूज नहीं कर सकते. तो बेसिकली जब सेम वेरिएबल एक दूसरे के साथ ऑपरेशंस में यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू डू द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, अलग से फॉर लूप लिखना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किल होगी, पर ऑलवेज गो सीरियली सो दैट एग्जीक्यूशन इज प्रॉपर. क्योंकि कई कई प्रोग्राम्स में पैरेलल एग्जीक्यूशन में डालते हैं, मतलब a प्लस बी इक्वल टू सी कोई और प्रोसेसर कर रहा होगा और c प्लस ए इक्वल टू बी कोई और प्रोसेसर कर रहा होगा, और अगर ये प्रोसेसर उस वाले से स्लो निकला तो c की वैल्यू अपडेट होने से पहले ही ये एडिशन हो जाएगी और आपके रॉन्ग रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा. So it is always better to do a serial operation or sequential operation rather than parallel whenever you have same memory. So हम जब भी कोई प्रोसेस करते हैं तो हम बोलते हैं कि पैरेललाइजेशन पॉसिबल है या नहीं. तो ये वो केस है जिसमें पैरेललाइजेशन पॉसिबल नहीं है और ये ऐसे प्रोग्राम हमेशा सीरियली एग्जीक्यूट होने चाहिए. Now this is how the output will look like. अब यूजर ने फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डालना शुरू किया. सो 2.5 माइनस 1.1 और 2 ये उसकी एंट्री थी. फिर हमने एलिमेंट 2 सेकंड मैट्रिक्स भी डालना शुरू किया. सो 2 प्लस 0.2 इसका एडिशन आना चाहिए था 2.2 जो कि आ रहा है. फिर 0.5 प्लस 0 इसका एडिशन आना चाहिए था 0.5 वो भी आ रहा है. फिर माइनस 1.1 और 0.23 इसका एडिशन कुछ माइनस 0.9 ये कुछ गलत है बट वी विल सी दैट वो 97 या कुछ तो आएगा, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है.
एंड फाइनली 23 और 2 इसका एडिशन आना चाहिए था 25 जो कि आ रहा है. Now let us understand a three-dimensional array. Now as I told you multi-dimensional array होते हैं पर as a scientist अभी मैंने इतना काम किया हुआ है फिर भी 4 डायमेंशन के ऊपर वाले अरेज इमेजिन करना बहुत मुश्किल रहता है और हम उसको यूज भी नहीं करते. एट मैक्स मैंने आज तक 5 डायमेंशनल अरे पे काम किया है, उससे ज्यादा कभी लगता भी नहीं है क्योंकि ह्यूमंस जो देख ही नहीं पाते उस पे कंपटीशन करके कोई मतलब ही नहीं है. There are some GPUs which are doing 128D processing and so on, but I don't know, it's only for the plain graphics or faster graphics. Other than that, your regular operations at 3.4 gigahertz, which is less than a nanosecond, you can do sequentially also, no issues at all. So let us try and do this particular program where user enters a matrix with size 2, 3, and 2, and then we are printing that particular size. So again for के अंदर पहला लूप जो है वो 2 फिर 3 और 2 है. to avoid the confusion I will tell you ये लास्ट एलिमेंट वाला जो 2 है वो सबसे लास्ट में होता है, मतलब फॉर के लास्ट लूप में रहता है. फिर बीच वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ रहता है और फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ रहता है. अब अनफॉर्चुनेटली ये दोनों 2 थे इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है. तो अगर ये 4 होता तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए था. एंड देन व्हाइल रीडिंग यू जस्ट से आई जे एंड के, ये भी सिक्वेंशियली जाते हैं. सबसे बाहरी लूप वाला सबसे पहले आता है, फिर इनर लूप वाला सेकंड आता है और फिर सबसे इनर मोस्ट लूप वाला थर्ड में आता है. एंड देन वंस यू स्कैन ऑल द वैल्यूज देन यू कैन डिस्प्ले दोज वैल्यूज इन एन सिमिलर मैनर. अब आप बोलोगे ये दो स्वैप कर दिए और एंड में अगर मैंने ये दो स्वैप कर दिए तो भी चलेगा क्या? तो हाँ डेफिनेटली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका बता के रखा है. अभी आप बोलोगे कि खाना चम्मच से खाना है या हाथ से खाना है, क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके. पर अगर हम कुछ एटिकेट्स फॉलो कर रहे हैं और चम्मच से खाना ये एटिकेट है उसमें, तो यू हैव टू डू इट. इट्स योर चॉइस, यू कैन स्टिल ईट विथ योर हैंड. Now, how we will display the each value here? You just have to printf, and once you do a printf, you can say test %d %d %d, and then finally slash n लिखना मत भूलना ताकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स जैसा लगे, वरना सारे 12 वैल्यू एक के आगे एक आ जाएंगे. तो ये स्लैश एन जो है वो इनर मोस्ट लूप में लगा है, तो आपका एक रो लिखने के बाद वो अपने आप नए लाइन पे जाता है. And then you tell me what will happen if you interchange these two. You will realize why I have told you to do it in that particular manner. So this is how you have entered the 12 values and they are displaying accordingly. And then once you enter those 12 values in series, you can verify 0,0,0 position पे क्या है and so on. Now how you pass a entire array to an function. जैसे कल हमने देखा कि आपने पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको फंक्शन को पास करना सीख लिया है, तो पासिंग एन अरे टू द फंक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है. सो लेट्स स्टार्ट विद पासिंग एन इंडिविजुअल अरे एलिमेंट टू अ फंक्शन. So here is one example where we are passing age1 and age2 where the two variables. Okay, that is a display function. Whatever two values you get, you have to print them and then you run your main program. तो यहाँ पे आप देखो, आप हमेशा पहले फंक्शन का एक फैंटम फंक्शन या डेफिनेशन जो है प्रोटोटाइप वो करके रखते हो और फंक्शन मेन लूप के नीचे लिखते हो, और इस वाले प्रोग्राम में फंक्शन मेन लूप के ऊपर ही लिख दिया है, विच इज माय फेवरेट वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि एक बार डिफाइन करो फिर नीचे लिखो, ये जनरल डेफिनेशन हम भूल जाते हैं. तो हमेशा मेन लूप लास्ट में लिखने की अगर प्रैक्टिस रखोगे तो ये सारी इश्यूज फेस करने ही नहीं पड़ते. आप जहां डिक्लेयर कर रहे हो उधर ही उसका पूरा फंक्शन लिख दो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके, इससे आप लिखने वाली 2 लाइन भी बचा लेते हो. देन व्हेन यू कम टू द मेन अरे, सो एज अरे बनाया है जिसमें 2, 8, 4, 12 ये वैल्यूज स्टोर किए हैं, और फिर हमने सीधा डिस्प्ले फंक्शन को एज अरे का फर्स्ट एलिमेंट और एज अरे का सेकंड एलिमेंट पास किया. नाउ फर्स्ट एलिमेंट मींस 8 and this is 0th element, so you have to be careful. और ये नंबरिंग में 99% स्टूडेंट कभी ना कभी तो गलती करते ही है, दो दे कैन इजीली रेक्टिफाइड. तो आपको फर्स्ट ईयर में ही मैं बता के रख रहा हूँ, आप कभी ना कभी ये गलती जरूर करोगे. सो लेट्स सी द आउटपुट विल हैव 8 and 4,
at its particular output. Second is passing an array to the functions. Again similar program है, calculate the sum, जो कि आज का एक्सपेरिमेंट भी था. तो calculate sum यहाँ पे हमने पहले ऑक्सिलरी डेफिनेशन कर ली है कि calculate sum करके मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ आफ्टर माय मेन लूप एंड्स. ये वाला मेरा मेन लूप है. So once I do that in the main loop, what will I write? I will declare a result and I will declare a age matrix. यहाँ पे आप देखो age matrix को पहले से मैंने number of elements mention नहीं किए, पर डिक्लेरेशन के वक्त वो गिन लेगा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 एलिमेंट्स है. Then result is equal to calculate sum of age and then result you declare up to 0.2% decimal accuracy. So आपको अगर 99.99 अगर एवरेज आ रहा है, या फिर 9987 एवरेज आ रहा है, तो whenever you write this 0.2f, इसका मतलब क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट जहां भी है उसके बाद के सिर्फ 2 एलिमेंट दिखाओ, तो आगे के ये वैल्यूज ट्रंकेट हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ यू डिस्प्ले द रिजल्ट. टिपिकली 0.2f ये प्रिफर्ड वे है, क्योंकि आपको फिर एवरेज जो है वो इस फॉर्मेट में दिखाई देगा. एंड जस्ट बाय राइटिंग 0.2f विदाउट पुटिंग 0 विल एंश्योर दैट यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो, 19999 जो भी है वो पूरा दिख जाए. सो इसीलिए हम यहाँ पे 3.2 वगैरह नहीं लिखते, हम हमेशा डायरेक्टली 0.2f लिखते हैं. ये ध्यान में रखना कि परसेंट के बाद पहला नंबर लिखना नहीं है, सीधा पॉइंट लिखो और नेक्स्ट नंबर लिखो. यू कैन ट्राई 3.2f लिखने से क्या होता है एंड यू कैन टेल मी द फन, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर आपको ये पहला नंबर नहीं लिखना होता. Then what will happen inside a calculate sum function? We are passing a float age array to this. So array has to be first declared, which we have already done initially, and we pass that particular array. Then we declare a new variable sum. Again, this is a local declaration. याद रखो ग्लोबल डिक्लेरेशन मेन और हर फंक्शन के ऊपर होते हैं, और लोकल डिक्लेरेशन जो है वो फंक्शन स्टार्ट होने के बाद अंदर होते हैं. तो ये जो है ये लोकल डिक्लेरेशन है, फ्लोट सम इक्वल टू 0. नाउ फॉर I गोइंग फ्रॉम 0 I लेस देन 6 I प्लस प्लस sum plus equal to age of I. So this is just adding the numbers, returning the sum, and then finally results are computed. So this is how you can pass the elements. So you pass the entire array function, only name of the array is passed as an argument. So यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना होता कि एज, ठीक है, आगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती व्हेन यू पास द एंटायर अरे. लास्ट टाइम हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अरे पास कर रहे थे, इसलिए अपने को एज 1 और 2 लिखना पड़ा था, पर इस केस में आपको पूरा मैट्रिक्स ही पास करना है. तो ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है वो फंक्शन में डिफाइन करना पड़ता है, पर जब एक्चुअल फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शन के डिफाइन करना नहीं पड़ता. This infines compiler that you are passing an one-dimensional array to the function. Now passing a multi-dimensional array, obvious सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप multi-dimensional array पास करोगे तो 2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाने, बाकी 1D और 2D में कोई फर्क नहीं होता. और जब भी आप फॉर लूप लिखते हो तो आपको नेस्टेड फॉर लूप लगाने पड़ते हैं, मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप. और यहाँ पे I और J कुछ रिप्लेसेबल नहीं होता, तो मुझे इस तरह के नेस्टेड फॉर लूप पसंद है. आई डोंट लाइक फॉर लूप वेयर ये I इसके अंदर यूज होता हो. तो उस तरह के फॉर लूप्स हमने सॉर्टिंग में देखे हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द 2-dimensional array passing. You start with a stdio.h. You declare a prototype function display number वाला. Then you go for int main. Okay. Then you declare different numbers. So you declare an array with num 2 cross 2. Then 4 elements. You ask user to enter 4 elements. Then a nested for loop, a scanf statement. Then display numbers का अपना user defined function call किया है, and then return 0. And in display number nothing is there. You are just calling printf function. So the input numbers will look like this: 2 3 4 5, 4 numbers, and display will have this kind of output 2 3 4 5. So in C program you can pass जितना भी बड़ा array चाहिए, and you can return the array from the function, but
this particular element has to be displayed individually. So you can write the display function in the user defined function itself, because returning an array is not possible. You have to return an individual element of an array. So you will say कि हमने पूरा age का array pass किया था, can I get age array back? Yes, but then you have to read the size of that particular age array, let's say I comma j tak, and then while returning you have to pass the individual element back one by one. So this is how iterative loop is used to return recursive loop. हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है कि रिकर्सिव लूप मतलब क्या, डिस्प्ले फंक्शन में से ही डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते जाओ, और जब सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो सब एक साथ रिटर्न हो जाएगा. Now, see, pointers is the next concept we are going to study. But before that, I will ask you to do some programming. So I will stop here and you can start with the programming assignments that I have given to you. So even if you have some doubts, you can ask me now.